this. पेज 17। आज हम हिंदी में शाम की वंदना करेंगे। अब 17 नंबर पेज से, जो हिंदी वाली बुकलेट है उसके 17 पेज में से। तो हम ठीक प्रकार से करेंगे तो अप्रूव करेंगे बनते जी। I said that if we do it well, Bante will approve it. So be careful. We'll record it for you, please. फोन पे रिकॉर्ड कर लो मैथे। वे जो भगवान सम्यक संबुद्ध अरहंत, भगवान के द्वारा भली भांति आख्यात धर्म और भगवान का श्रावक संघ जो ठीक प्रकार से मार्ग पर चल रहे हैं, उन भगवान बुद्ध धर्म और संघ की यथोचित सत्कार से वंदना करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। भगवान सादर पूर्वक दी गई हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार करें, हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। मैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध का अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा आख्यात धर्म को नमन करता हूँ। भगवान के मार्ग को भली भांति प्रतिपादित करने वाले संघ को नमन करता हूँ। आए हम भगवान की प्रारंभिक वंदना करें। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। आए हम भगवान बुद्ध का अनुस्मरण करें। भगवान बुद्ध की ऐसी कीर्ति प्रचारित है। ऐसे हैं अरहंत सम्यक संबुद्ध भगवान, ज्ञान और आचरण से सर्व संपन्न, सुगत लोक ज्ञाता, मनुष्यों को अनुपम कुशल सारथी की भांति संयमित करने वाले, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। आए अब हम भगवान बुद्ध के गुणों का पाठ करें। भगवान बुद्ध जो श्रेष्ठ अरहंत हैं और उत्तम गुणों से युक्त हैं, जो शुद्धता, अति उत्तम प्रज्ञा एवं करुणा के पुंज हैं, जिन्होंने समझदार मनुष्यों की बोधि जगाई, जैसे सूर्य कमल खिलाता है। मैं उन अहिंसक जिन्न का सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध जो सभी प्राणियों की उत्तम शरण है, मैं उनका पहली अनुस्मृति के रूप में सिर झुकाकर वंदन करता हूँ।
मैं भगवान बुद्ध का दास हूँ और बुद्ध मेरे शास्ता हैं। मैं भगवान बुद्ध को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और मैं श्रद्धा से भगवान द्वारा बताए गए बोधि के मार्ग पर चलूँगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से भगवान के मार्ग पर मेरी प्रगति हो। और भगवान बुद्ध की वंदना करने से जो पुण्य मैंने अर्जित किए हैं एवं उन महर्षि के तेज से मेरी सारी बाधाएं दूर हों। नमन करते हुए पढ़ेंगे। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने भगवान बुद्ध के प्रति दुष्कृत्य किए हैं, भगवान उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, जिससे भविष्य में मैं संयमित रहूं। आए अब हम धर्म का अनुस्मरण और वंदना करें। जो धर्म भगवान ने भली प्रकार से समझाया है, स्पष्ट दिखाई देने वाला है, कालातीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करने वाला है, अंतर्मुखी करने वाला है, प्रत्येक प्रज्ञावान को स्वयं अनुभव होने वाला है। आए अब हम धर्म के महान गुणों का पाठ करें। भली प्रकार से आख्यायित होने के कारण ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसके मार्ग और फल परियत्ति और मोक्ष दो आयाम हैं। जो धर्म को धारण करते हैं वह उनको नीचे लोकों में गिरने से बचाता है। मैं अंधकार को हटाने वाले इस धर्म की वंदना करता हूँ। ये धर्म सभी प्राणियों को शरण और उत्तम सुरक्षा प्रदान करता है। उस धर्म की दूसरी अनुस्मृति के रूप में मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। दास हूँ और धर्म मेरा श्रेष्ठ स्वामी है। मैं धर्म को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और धर्म की वंदना करते हुए धर्म के मार्ग पर भली प्रकार चलूँगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, धर्म ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्त्रा के धर्म पर आगे बढ़ूँ और धर्म की वंदना करते हुए जो मैंने पुण्य अर्जित किए हैं एवं उन महर्षि के तेज से मेरे सारे संकट दूर हो। अब नमन करते हुए पढ़ेंगे। मन वचन और कर्म से जो भी धर्म के प्रति मैंने दुष्कृत्य किए हैं, धर्म उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे भविष्य में मैं संयमित रहूं। आइए अब हम संघ का अनुस्मरण करें। भगवान के श्रावक संघ जो कि भली भांति मार्ग पर चल रहे हैं, सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं और सही प्रकार से चल रहे हैं, जो ये 4 युगल 8 प्रकार के आर्य हैं, ऐसे भगवान के श्रावक संघ हैं। वे भेंट देने योग्य हैं, आतिथ्य के योग्य हैं, दक्षिणा देने के योग्य हैं और नमस्कार के योग्य हैं। भगवान के संग इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र हैं। आए अब हम संघ के महान गुणों का पाठ करें। सद्धर्म से उत्पन्न सद्गुणों से युक्त संघ मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करता है। जो 8 आर्यों का श्रेष्ठ संघ है, जिनकी काया और चित्त शील आदि धर्म से युक्त हैं, उस शुद्ध आर्य संघ को मैं वंदन करता हूँ। जो संघ सभी प्राणियों की उत्तम शरण है, उस संघ की तीसरी अनुस्मृति के रूप में मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं संघ का दास हूँ और संघ मेरे श्रेष्ठ स्वामी हैं। मैं संघ को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और संघ की वंदना करते हुए संघ के भली भांति प्रतिपादित मार्ग पर चलूँगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, संघ ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। मेरे इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्त्रा के धर्म में आगे बढ़ूँ और संघ की वंदना करते हुए जो मैंने पुण्य अर्जित किए हैं एवं उन महर्षि के तेज से मेरे सारे संकट दूर हो। अब फिर नमन करते हुए पढ़ेंगे। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने संघ के प्रति दुष्कृत्य किए, संघ उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे भविष्य में मैं संयमित रहूं।
ब्रह्मा च लोकाधिपति सहम्पति कतंजलि अंधवरम अयच्छत्थ संतिद्ध सत्तापरज्जखा जातिका देशे तु धम्मम अनुकंपिमम इमं भजम। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. This evening I thought I would give some meditation instruction, and I think one of the somewhat unique features of Thai forest tradition Ajahn Chah is there is no Ajahn Chah method of meditation. But it's not that there's no meditation happening. There's a lot of meditation, and there's a lot of emphasis on meditation and mental development, mental training, but Ajahn Chah would use different techniques, different methods, depending on the temperament of the person or the particular difficulty that they might be experiencing, so that and of course that's been passed on through Ajahn Sumedho and the Western Sangha, so that there's a sense of having a grounding in different particular practices, and gaining some, encouraging people to gain some experience with different practices, so that they can learn how to apply them and use them appropriately for their own meditation. Personally, I tend to say my primary meditation is mindfulness of breathing. So when I give instruction, it usually is say rooted in the practice of mindfulness of breathing. But it's important that even if somebody has a different technique, there are the fundamental principles of how you use that practice that you learn how to apply to different practices, different techniques. So anyway, we'll explore that this evening. लुंगपुर कह रहे हैं कि आज हम ध्यान के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। उस संदर्भ में आपने कहा कि थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन का, अजान चाह की ट्रेडिशन का एक खास
कोई स्पेशल तरीका नहीं है ध्यान करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ध्यान नहीं होता वहाँ पे। बहुत ध्यान होता है का अभ्यास किया जाता है, मेंटल ट्रेनिंग का अभ्यास किया जाता है। इज दिस वर्किंग? आर यू एबल टू हियर मी? ओके। अजान शाह जो हैं टेम्परामेंट के हिसाब से, साधक के टेम्परामेंट के हिसाब से अलग अलग मेथड सजेस्ट करते थे, और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी हो किसी समय तो उस हिसाब से भी साधना की विधि समझाया करते थे। और ये सब साधना के जो विधियां हैं अजान सुमेधो के माध्यम से हम सब तक पहुंची हैं, और हमारा इसलिए विभिन्न तरह की प्रैक्टिसेस में हमारी ट्रेनिंग है, वी हैव ग्राउंडेड इन देम। एंड हम इस ट्रेडिशन में साधकों को अलग अलग तरह के सिस्टम्स की जानकारी दी जाती है, किस तरह से उसको अप्लाई करना चाहिए। लुंगपुर अपने बारे में बताते हैं कि मेरी जो प्राइमरी साधना है आनापान सती रही है, और मैं इंस्ट्रक्शंस जो भी देता हूँ उसी के आधार पर देता हूँ। और फिर भी हमको ये महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जो भी अलग अलग टेक्निक्स हैं उन सब के अंदर कुछ बातें कॉमन भी हैं, कुछ चीज़ें एटीट्यूड्स कॉमन हैं। तो हमको समझना चाहिए कि विभिन्न प्रणालियाँ जो हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाए। So as we begin a meditation session, of course the first thing is to actually get comfortable physically. It's a body-mind practice, and in the Buddha's instructions on mindfulness of breathing, then he says, to sit cross-legged with the body erect, and then establishing mindfulness on the in-breath and the out-breath. And I mean, it's very simple instructions, but it is an indication again that the sense of you're not disregarding the body, and you sit with an upright posture, and have a nice, try to pay attention to a certain balance of posture, so that that sitting upright is not too sort of tense and too tight, but also not too relaxed. Sometimes it's good to like sometimes when we sit in meditation, just to look up and take a look at the Buddha image, that Buddha statues, and you think of, because there's a good example of how we should be sitting meditation. We were, whatever temple you go to, or monastery, or a museum like yesterday, I just haven't seen, statues all crunched up or hunched over. You don't make statues like that. It doesn't sort of, this isn't how it works. So that sitting upright and having a nice balanced posture, but also not too tense, not too tight. When Luang Por Sumedho went to live in England, it was about 5 years before he came back to visit Thailand and to pay respects to Ajahn Chah. And one of the things that the students of English students in
Chithurst at the time, was inspired. He was a sculptor and did a Buddha image to offer for Luang Por Sumedho to offer to Ajahn Chah, and so it was a very sincere gesture. But the image was kind of stiff. So it was really so, it was, other features were very nice, but it was kind of stiff. And so Ajahn Sumedho brought it and offered it to Luang Por Chah, and of course Ajahn Chah was very warm, and he had the image on a little table next to him. Every once in a while he'd look over and he'd kind of smile, and finally he sort of said, "Yeah, that's really a Western Buddha. He's really tense." He's sort of really uptight. And so that this balance of just even physically, when you begin to pay attention, to bring attention to the body, you want to inhabit your meditation. You don't just want to either turn the mind off or try to push the mind away or try to override the body. It's like this body-mind complex. We have to be able to want to be present for it, but we have to learn from it, because it's actually showing us in certain ways, where we're holding, where we're tripping ourselves up, and so that paying attention to the posture and checking in, because we can be drifting. In terms of our mindfulness, awareness can be drifting, and we're just kind of leaning a little bit. It's nothing that bad, but when it's helpful to check into the body, and then just the rhythm of the breath, starting to get a feel for the rhythm of the breath, so that it isn't. You can't force it, but trying to pay attention. It's relaxed and not constricted, and so that getting a feel for that rhythm of the breath, and so and then because that's what you say in the Buddha's instruction. He says, as you're sitting down and being aware of the in breath and the out breath, and then the Buddha moves into breathing in a long breath. One knows one's breathing in a long breath, breathing in, breathing out a long breath. One knows one's breathing out a long breath, and same with a short breath. But it's sort of that there's that preparation before you even start to focus in, but just paying attention to the posture, paying attention to the rhythm of the in breath and the out, but getting a feel for the body and the mind. वो कह रहे हैं कि जैसे अभी हम साधना का सत्र शुरू करेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि समझना चाहिए कि पूरी मन और शरीर की कंबाइंड प्रैक्टिस है। तो उसके लिए पहले हमें अपना पोस्चर जो है हमारा, जिस तरह से हम बैठे हैं, वो ठीक होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इंस्ट्रक्शंस में आनापानसति सूत्र में कहा है कि पालती मार के बैठें और शरीर को सीधा रखें, और हमारे जो सजगता है, जो सती है, सांस के आने पे सांस के जाने पे बनी रहे। बड़ी सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं।
लेकिन तो स्पष्ट बात यह है कि हमको सांस का ध्यान करना है, लेकिन शरीर को भी उपेक्षा नहीं करनी, उसको डिसरिगार्ड नहीं करना है हम। और जब हम कहते हैं कि सीधा बैठना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ना तो हम उसको बहुत टाइट बैठें और ना ही बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। एक बैलेंस बनाना है, और हर स्थिति में बैलेंस बनाने का हमको अभ्यास करने की ज़रूरत है। जब भी हम कभी कभी ये भी अच्छा रहता है कि हम भगवान बुद्ध की मूर्ति को और ध्यान कर लें। जैसे सामने हमारे सामने भगवान बुद्ध की रूप है, उसका सिर झुका हुआ है, और जैसे ड्राउजीनेस का स्टेट आती है, उस तरह की स्टैचू आज तक कभी नहीं देखी, क्योंकि वो ये किसी मूर्तिकार ने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसी भी हो सकती है। और भी कभी नहीं देखा कि वो बहुत स्टिफ बैठे हैं। तो एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि जब लुंग पोर सुमेधो इंग्लैंड गए थे, फायर हुआ था, तो उसने एक मूर्ति बनाई थी भगवान बुद्ध की, और अजान सुमेधो से रिक्वेस्ट किया था कि वो उनकी तरफ से अजान चा को ऑफर करें। और वो मूर्ति जो थी, सब उसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन शक्ल से ऐसा लगता था कि बहुत स्टिफ है, बहुत तनाव है। तो अजान सुमेधो ने उनको लुंग पोर चा को ऑफर किया उसको, तो बहुत आत्मीयता से उन्होंने लिया, उसको टेबल पे रखा और देखते रहे। और लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि सचमुच में ये वेस्टर्न बुद्धा ही है, बहुत टेंस बैठा है। तो हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि हमको बैलेंस रखना चाहिए अपने पॉस्चर में भी, अपने चेहरे के हाव भाव में भी, कि तनावपूर्ण तरीके से नहीं बैठना चाहिए। तो ध्यान जब करें तो हम उसको, ऐसा नहीं है कि हम मन को इधर धक्का दे दें, उधर धक्का दे दें। ये मन और शरीर दोनों की मिली जुली प्रक्रिया है। और हमारा जो सजगता है, सती है, वो ड्रिफ्ट भी कर सकती है। तो इसलिए हमको, अगर पॉस्चर ठीक होगा तो ड्रिफ्टिंग भी थोड़ी कम होती है। तो देखेंगे, आप सबसे पहले कहा कि शरीर को, पॉस्चर को ठीक कर लें, फिर जो ब्रीदिंग का रिद्म है, जो सांस के आने जाने का रिद्म है, उसको बड़ी शांति से देख लें। कोई उसको फोर्स नहीं करना है, जैसा हो रहा है उसको जान लेंगे। और हम बड़े रिलैक्स तरीके से बैठे हुए हैं, और सिर्फ सांस आ रहा है उसकी जानकारी है, सांस जा रहा है उसकी जानकारी है। और फिर अगली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सांस लंबा है तो उसको जानते हैं, सांस छोटा है तो उसको जानते हैं। तो ये सब हमारी तैयारी है एक तरह से, कि हम शरीर को ठीक रख रहे हैं, सांस के रिद्म को जान रहे हैं, और फिर उसके आवागमन में कि वो सांस लंबा है कि छोटा है उसको भी जान रहे हैं। So as the Buddha goes into the instruction on mindfulness of breathing, yesterday I mentioned that in the discourse it's 16 kind of steps or stages, or aspects of mindfulness of breathing, and the first two are just knowing one breathes in a long breath, knowing one breathes out a long breath, knowing one breathes in short breath, knowing one breathes out a short breath. The emphasis is just on the knowing, and then the rest of the say the 14 steps or aspects are that one trains oneself. Sikati. It's like one is training oneself, or training thus. One is, say, experiencing the whole body, or one's calming the body processes. So it's like, but it's a different verb, and so that there's that aspect of just at the beginning, it's just that knowing of the rhythm of the breath, the knowing of the breath coming in, the breath going out, knowing and experimenting with seeing where it's more prominent. How does one experience? How does it feel to be a long breath and one? But it's sort of just that knowing is enough. But all the rest of the stages are the verb is to train oneself. So in training, or let's say with the verb sikati, it's like training, learning, educating oneself, siksa,
in Sanskrit, and I'm sure that the Hindi also. Yeah, in Hindi Same it's word. same. So in Thai it's the same. So it's like a student, like whether they're going to grammar school or university, they are suksa, they're naksuksa, people who are studying. So that you're taking the breath and the experience of, and it's divided up into the aspects of the body, feeling, mind, and the dhammas or phenomena. And so it's training oneself to experience the breath in ways that one is actually learning. And so it's not just trying to force the breath into a particular mold, force the mind into a particular mold. It's these are structures for training and learning and educating oneself on how to be peaceful, how to be free from suffering. लुंगपुर हमें समझा रहे हैं कि जैसे जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं आनापानसति सूत्र में, जैसे उन्होंने कल भी बताया था कि उसमें 16 स्टेप्स हैं, और उनमें से पहले 2 स्टेप तो हैं कि वो केवल जानकारी की बात है कि वो साधक जो है जानता है कि सांस अंदर जाने वाला सांस लंबा है कि छोटा है, बाहर आने वाला सांस लंबा है कि छोटा है। तो इसमें पूरी एम्फेसिस जानकारी पे है। और उसके बाद जो बाकी के 14 स्टेप हैं उस सब में ट्रेनिंग की बात आती है। वहाँ पे जो क्रिया यूज होती है, सिक्खति शब्द इस्तेमाल होता है। सिक्खति अर्थात सीखता है, तो वो ट्रेनिंग की बात है, एजुकेशन की बात है। और हम क्या सीखते हैं कि किस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे शरीर को अनुभव करें वैसे फीलिंग को, वेदना को अनुभव करें, मन को अनुभव करें, चित्त को अनुभव करें और धम्म को अनुभव करें, तो हमारी साधना परिपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से बाकी 14 जो स्टेप्स हैं वो सीखने के हैं। सिक्खति शब्द इस्तेमाल किया गया, पहले में था सिर्फ जानता है, पहचाना था। So one of the ways, as we pay attention to the breath, or establish the breath as the object of attention, sometimes it's helpful to have imagery, so that lifting up the experience of the breath into awareness. That's actually, one's actually lifting it up, and so and then attending to where one's experiencing. How does it feel? And it doesn't. It could be in the tip of the nose. Could be in the, as you breathe in, there's a cool spot just in the nasal passages. There's a feeling in the chest area. The feeling of the abdomen rising and falling, and it doesn't have to be fixed on one particular place. In the suttas, the Buddha does not specify. I mean, it's kind of vague. Pali Mukang, which is kind of in front of you. Anywhere can be in front. So and of course there's 2,500 years of arguments of what's the exact spot. But I think it's important that the Buddha, some people want that sort of absolute certainty. Personally, I think the Buddha was incredibly skillful to leave it, because everybody has a bit of different experience. How we experience the body, how we experience the mind, and even that changes as well. So then you've got a big enough container. The main thing is that you're knowing, you have awareness, you have mindfulness, and that sense of establishing attention and sustaining attention. And in order to sustain attention, one has to, you can't just be a passive recipient
of awareness. You have to get involved. So that lifting up that experience, the feeling, the sensation, and I said, okay, how does one feel it? Where's the experience? Okay, lifting it up, taking an interest in it, looking at it from at different angles a bit, and then the mind will drift. It'll wander as you lift it up again. So you're engaging attention in a way that you're lifting up the object into the mind, and not holding it tightly, but there's holding it so that you're engaging with it, and then sometimes that awareness will sustain itself for quite some time, but then it drifts away. But then you lift it up again, and because when you're engaging with it, then you notice when it's starting to shift or change, and then and you can relax into that rhythm of the breath, the breath coming in, the breath coming out, and being a long breath, being a short breath. Because sometimes you think, the long breaths are better. I like the long breaths. It really doesn't matter. I mean, sometimes, when the mind is incredibly peaceful, when it's really still and peaceful, the breath, just this wisp of a little breath, but it's really satisfying. And it's so that to be able to, it's not that there's some absolutely perfect breath that you're trying to achieve. You have the breath as a vehicle for that continuity of awareness and mindfulness. जब हम साधना करते हैं सांस की जानकारी की, तो उसको महसूस करना, सांस को, अपने मन को उसमें सांस में लगाने के लिए अच्छा रहता है कि हम सांस कहाँ कैसा महसूस हो रहा है, वो नासिका के द्वार पे हो रहा है या नासिका के अंदर जो पैसेज हैं उस पे नेसल पैसेज में हो रहा है या छाती में हो रहा है या पेट में हो रहा है, तो हम उसको जानते हैं कैसा महसूस हो रहा है, तो इससे मन जो है उसमें इंटरेस्ट लेता है और वो टिकना ज़्यादा संभव होता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन को एक ही स्थान पे लगाए रखें। पिछले 2500 वर्षों से इस पर आर्गूमेंट होती जा रही है कि क्या मतलब है, क्योंकि जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया परिमुखम, परिमुखम का लिटरल ट्रांसलेशन है सामने। सामने का मतलब कहाँ सामने, ये एक वेग सी है चीज़ जिसका अलग अलग लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया है। कई लोग चाहते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट फाइनल चीज़ हो, हमें बिल्कुल बता दीजिए क्या करना है, लेकिन भगवान बुद्ध उनके लुंगपुर कहते हैं कि सचमुच में बहुत स्किलफुल थे। उन्होंने इसको इतना वेग रखा क्योंकि हर आदमी के लिए अनुभव अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से अनुभव करता है, तो अटेंशन सस्टेन करने के लिए अलग अलग स्थान भी हो सकता है। तो जो एक बात जो महत्वपूर्ण ये है कि हम एक पैसिवली अपने अनुभव को ना रिसीव करें कि हाँ हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट लेने का मतलब होगा कि उसको ध्यान से देखें और अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, ताकि हमारा मन उठा रहे, मन जो है प्रसन्न रहे कि, और जो हमारा आलंबन है ध्यान का, यहाँ पे जो सांस है, उसको हम उसकी जानकारी को हमारे यहाँ काफ़ी स्पष्ट रहे, ताकि हम उसमें मन लगा रहे और हमारा मन का भटकना कम हो। लेकिन फिर भी मन तो भटकेगा ही। जैसे ही मन भटकेगा, अगर हम इस तरह से ध्यान करेंगे, इंटरेस्ट लेके ध्यान करते हैं उसमें, ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन में, सांस में, तो जैसे ही मन भटकेगा हमें तुरंत मालूम पड़ जाएगा और फिर हम वैसे ही मन को उभारने की कोशिश करते हैं ताकि सांस की जानकारी स्पष्ट हो। कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कोई महत्व नहीं, जानकारी हमें स्पष्ट हो। तो जैसे भंत कहते हैं कि हमको शुड रिलैक्स इनटू द रिदम ऑफ ब्रीदिंग। सांस आ रहा है, जा रहा है, उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है कि यहीं मालूम पड़ना चाहिए या ऐसा ही मालूम पड़ना चाहिए। जैसा भी उसका स्वाभाविक रिदम है उसको जाने और उसमें रिलैक्स करेंगे। तो जब ये भाव भी नहीं रहे कि लंबा ब्रेथ अच्छा होता है कि छोटा ब्रेथ अच्छा होता है,
जब इस तरह से ध्यान करते हैं, when we relax into the rhythm of breathing, तो मन शांत हो जाता है और सचमुच में बहुत पीस महसूस होती है। हमें ये मन से भाव निकाल देना चाहिए कि कोई परफेक्ट चीज़ है कि इसी तरह से करने से परफेक्ट होगा, या जो ब्रेथ जो है हमारा परफेक्ट ब्रेथ ऐसा होता है, ये अवधारणा निकाल देनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सजगता बनी रहे और निरंतरता से कंटिन्यूटी रहे, उसमें समझदारी में जानकारी निरंतरता से रहे। So taking the bodily experience of breathing and grounding awareness, grounding attention in the experience of the body. It's actually very interesting that they in the discourse collections, the Samyutta Nikaya, which is collected on discourses on particular themes, the chapter on the unconditioned begins with a discourse, the way to the unconditioned is through mindfulness of the body. You think, oh, okay, we're going to get a chapter on the unconditioned. You're going to get this sort of pure, unfiltered way about the nibbana and the unconditioned and the Buddhism. Mindfulness of the body. You have to be grounded. You have to be rooted in order to experience the unconditioned. It's not. You can't extract it from your experience. It's within that experience. So that sense of establishing mindfulness of the body, and that's where, say, like in the Buddhist instructions, there's the long breath, short breath, and then again the sense of training us. Experiencing the whole body, I breathe in. Experiencing the whole body, I breathe out. Or Ajahn Chah translates it as sensitive to the whole body, I breathe in. Sensitive to the whole body, I breathe out. The verb that is used, and sometimes it's helpful to know some of these technical terms because it's pointing in a direction. And verbs are actions, what we to be doing. So the verb is pati sangveti, and both pati and sang are qualifiers, or amplifiers, and the root is veti, which is feeling. It's the same root as vedana, so that feeling. Fully feeling, experiencing fully the whole body, and the word that's used is sambhagaya, which is really literally all of the body, the whole body. So it's you paying attention to the again the posture, the breath, the whole, and being able to use that in a way that one is becoming alert and attentive to both the rhythm of the breath and the experience of the breath. And it's in the next step where the Buddhist is like calming the bodily processes. I breathe in, calming the bodily processes. I breathe out. So that once there's a good anchor and stable feeling of inhabiting the breath and the body, then, okay, how do I deepen it by relaxing and settling into the breath
and settling into the experience. So it's you're training the mind, training mindfulness with each in-breath and each out-breath of how to be present, but also how to relax and settle and bring about a sense of calm and ease. लुंगपुर बता रहे हैं हमें कि जो सांस लेते हैं वो शरीर का अनुभव है और वो बहुत आवश्यक है कि क्योंकि हम अपने शरीर को, हमारा जो अटेंशन है वो ग्राउंडिंग होनी चाहिए उसकी शरीर के अनुभव में, और वो बहुत अगर ठीक से करें तो बहुत उसमें ध्यान मन लगता है उसको करने में। एक चीज़ जिसकी ओर वो हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि संयुक्त निकाय में जहाँ पे कि प्रवचन कुछ आधार पे जो आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनके चैप्टर बने हुए हैं, तो उसमें एक चैप्टर है जो अनकंडीशनड के ऊपर चैप्टर है कि जो निर्वाण है उसके बारे में बात चैप्टर में। तो उसमें पहला जो सूत्र है उसमें बात कही जाती है कि द वे टू अनकंडीशन इज थ्रू माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी। तो कई बार ये अजीब सा लगता है कि जो हम निर्वाण की बात कर रहे हैं, इतना सूक्ष्म बात है, महीन बात है, और उसकी कह रहे हैं कि उसका रास्ता जो है चित्त शरीर की पूरी सजगता से, जानकारी से होता है। उसका तात्पर्य यही है कि जब तक हमारी साधना के समय हमारा चित्त शरीर में ठीक तरह से रूटेड नहीं है तो हमारा अनुभव उतने जो है ठीक से नहीं हो पाते, और उस जब ग्राउंडेड होता है तो उस अनुभव के अंदर ही हमको अनकंडीशन का अनुभव भी हो सकता है। तो ये सब ट्रेनिंग की बात है, सीखने की बात है। और आगे जो इंस्ट्रक्शन आती है कि जो मैं कहा था, सब काया पटि संवेदी, तो सारी काया को, सारे शरीर को जानते हैं। तो बनते बता रहे हैं कि पटि और संवेदी दोनों क्वालिफायर्स हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, और वर्ब जो है वेदी है, जिसका मतलब है फीलिंग, महसूस करना, जो वेदना से ही बनता, वेदना भी उसी शब्द से आता है। तो इसका मतलब है, अर्थ है कि हम सारी काया में, सारे शरीर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी है, कैसा अनुभव हो रहा है उसकी जानकारी है। तो हम सारे केवल पहले शुरू किया पॉस्चर से, फिर सांस के रिदम से, अब सारी काया में किस तरह का अनुभव हो रहा है, कैसी फीलिंग हो रही है, उसको जान रहे हैं। इसके बाद अगला जो उसका आयाम है, इंस्ट्रक्शन है आनापानसति सूत्र में, कि हम काया में जो भी बॉडीली प्रोसेस हैं, संखार हैं, उनको शांत कर रहे हैं। मतलब कि हम सांस लेते हुए, ध्यान करते हुए रिलैक्स इतना हो रहे हैं ताकि हमारी सजगता और गहरी होती चली जाए। हर सांस के अंदर आने वाले सांस के साथ हम पूरी तरह से सजग हैं, पूरा सांस बाहर आ रहा है तो पूरे सांस के साथ सजग है। तो इस तरह से हमारी जो सजगता है वो गहराई में जाती रहती है। So as we develop our meditation, develop our mindfulness, something that is, there's the establishing of attention or mindfulness or focus, but there also needs to be a quality of, say, reflection or investigation, and sometimes it's hard to use language and English language as well, because it tends to be so concrete. But that sense of investigation is not, say, thinking and proliferating. It's directing attention so one's taking an interest or looking in different ways, so that one's absorbing the experience and sort of saying, well, what am I learning? Is this working? Is it not working? How do I turn attention? What am I missing in this? So there's a certain questioning, but it's not just proliferating and thinking, but it's being attentive and alert to what is it that's helping the mind become more clear, more settled, more present,
more interested in this whole process. Because, I mean, it's one of the problems of meditators, or whether it's monastics or lay people, that you do it for a while, and you just get used to it, and we do that with everything, and then you get into a habit, and you keep plugging away at this and doing it in a particular way. But it's important that this aspect of investigation and seeing, okay, am I actually mindful? Am I actually present? How do I feel? Am I relaxed? And that's, there's they say the boundaries between mindfulness of the body, mindfulness of feeling, mindfulness of the mind, mindfulness of Dhammas. Sometimes, there's crossover there. It's not like a pure body experience or pure feeling experience. There's also the way that they say that the Buddha is joy and is ease and tranquility and happiness, well-being. And because sometimes we sort of you feel guilty, and sometimes I shouldn't be feeling this good. But that's really is the case, that the meditation and the mindfulness just really brightens the heart. But then that's not the whole purpose. And it's where the next steps of the Anapanasati is the Buddha's. This is learning the processes of the mind. As he said, Citta Sankara Pati Samvayati. So experiencing fully sensitive to the Citta Sankara, mind conditioners is maybe a good word. It's the things that condition the mind, or the conditions of the mind. And what conditions the mind, the content of the mind, is feeling, Vedana, and perception. Like the different thoughts, emotions, the building block, the sankharas of the mental sankharas, arise out of a more automatic experience of Vedana, of feeling, pleasant, unpleasant, neutral, and sanya in terms of perception, memory. Also, there's an aspect to perception, and again through the function of memory, is that it gives meaning and value to a certain to all of our experience. So each mind moment always has Vedana and sanya, and from that then there starts to be reactions of liking, of disliking, of wanting, of approving, of disapproving, of moods and emotion and thought. And to be able to come back and experience the roots of that movement of mind, it gives a doorway into how to settle the mind. And of course, that's the next step in that section of is that calming the mind conditioners I breathe in, calming the mental formations I breathe out. So it's again this learning process, training thus, and sometimes in training, sometimes it works and sometimes it doesn't. Sometimes you have to pay attention to, okay, did this work, or what was the experience? How'd that feel? What was that? And
or all of a sudden, what the heck was that? आगे बनते हमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में आगे बता रहे हैं कि साधना को परिपूर्ण करने के लिए, सति को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक रिफ्लेक्शन, इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है। वो अंग्रेज़ी शब्द जो है रिफ्लेक्शन, बता रहे हैं कि एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं है। हिंदी में जिसे कहते हैं विवेचना या मीमांसा, कि हम उसको समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। और बंते जी बता रहे हैं कि वो केवल विचार करना नहीं है, कोई प्रपंच नहीं चला रहे, हम एक्चुअली गहराई से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और विभिन्न प्रकार से देख रहे हैं ताकि जो अनुभव हो रहा है हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसमें कुछ स्तर तक एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है। हम पूछ रहे हैं कि हो गया, अपने आप से पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, ये मेरे अटेंशन कैसा है, क्या मेरे मन को साधना करने में मदद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे एक तरह की आदत सी पड़ जाती है और हम पैसिविटी में चले जाते हैं, हम उसको ध्यान से देखने का, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भूल जाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस तरह से ही पैसिविटी नहीं होती है, और धीरे धीरे हम काया, वेदना, चित्त, धम्म, सारे जो उनकी बाउंड्रीज ऐसे लगता है कि अलग अलग हैं, वो बाउंड्रीज अलग नहीं है, वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे में से मिले जुले हैं। तो जब हम साधना ठीक से करते हैं तो काया के ऊपर काम करते करते वेदना भी महसूस होती है और चित्त की स्थिति भी, और जैसे कि आगे की इंस्ट्रक्शंस में बंते जी ने बताया, तो बता रहे थे कि जैसे भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वेदना अनुपश्ना की, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग में, उसके सेक्शन में, इस आनापानसति वाले में, तो उसमें वो भगवान हमसे कहते हैं एक्सपीरियंसिंग जॉय, प्रीति का अनुभव हो रहा है उस समय भी जानता है सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सुख का अनुभव हो रहा है तो जानता है सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। तो बता रहे थे बंते जी कि ये प्रीति और सुख का अनुभव होना अच्छी बात है। कई बार साधकों के मन में ये बात रहती है कि जितना मुझे दुख होगा, कष्ट होगा, उतना ही मैं आगे प्रगति करूँगा। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे पहले भी आपने बताया था कि भगवान ने एक सूत्र में बताया है कि जब अनुभव होता है दुख का तो उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। दुख के अनुभव से अधिक दुख बढ़ भी सकता है, और दूसरा रिजल्ट है कि नोबल सर्च, हम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उस बात से भी हमको समझना चाहिए कि दुख के अनुभव से इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही हमको सुख, और बंते जी ने फिर दोबारा ये मैं याद दिलाया कि नोबल सर्च का रिजल्ट है जॉय, ईज, ट्रैंक्विलिटी। तो हमारे मन में प्रमोद जागता है, प्रीति जागती है, सुख जागता है, चित्त शांत होता है, और फिर हमारे साधना पुष्ट होती है। तो हमको कई बार ऐसा साधकों को लगता है कि मुझे इतना सुखी नहीं होना चाहिए, मुझे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तो ये जो अवधारणा है ठीक नहीं है। हमारी जो साधना है उसका उद्देश्य है कि हमारा चित्त प्रसन्न हो और इट शुड ब्राइटन अप। तो अगले स्टेप के रूप में बंते जी ने हमें बताया कि हम सीखते हैं कि चित्त संखार पटिसंवेदी, जो चित्त में संस्कार उठ रहे हैं उनको समझते हैं, उनकी महसूस करते हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। चित्त के संस्कार का मतलब कि किस तरह से हमारे चित्त को कंडीशनिंग हो रही है, कौन सी चीज़ें उसको कंडीशन कर रही हैं। तो उसमें दो महत्वपूर्ण बातें लुंगपुर ने बताई कि एक परसेप्शन अर्थात संज्ञा, और दूसरी फीलिंग अर्थात वेदना। तो वो चीज़ें जो हैं हमको जब हम इन्वेस्टिगेशन के मूड में रहते हैं तो हमें स्पष्ट समझ में आता है किस तरह से हमारे अनुभव जो हैं संज्ञा और वेदना इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने हमें याद दिलाया कि हर चित्त के एवरी मोमेंट ऑफ द माइंड, जो चित्त की हर क्षण जो है उसमें हमेशा संज्ञा और वेदना साथ चलती है। तो वो उनके अनुभव, उन वेदना के अनुभव से ही हमको करते हैं। इसका अगला जो स्टेप बता रहे थे, जो मेंटल फॉर्मेशन है उनको शांत करेंगे, पसंद भय बात आएगी, उसको शांत करेंगे। और इस तरह से, और प्रतिक्षण हर इंस्ट्रक्शन में, इस क्षण, इस वाले सेक्शन में हर इंस्ट्रक्शन में वर्ड यूज होता है सिक्खति, वो सीखता है और तो ट्रेनिंग करता है, और अटेंशन किस तरह से दिया जाए उसको समझता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। और कई बार सीखने में देर लगती है, कई बार जल्दी सीखता है, कई बार मुश्किल होती है, लेकिन सीखने की बात है तो हमको अभ्यास करेंगे ठीक से तो वो सीखने के आगे भी सब सरल हो जाएगी, सफल। That's actually